Very good afternoon, all of you. Very good afternoon. This year, Rambo. This year, Rambo. 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 चाहे आए करोना क्या है किरण भाई लोग जुड़ रहे हैं. So today we'll take the class on Pelton Wheel. लोग जुड़ रहे हैं. चलो चलो चलो. तौफीक साहब आ गए. बड़े साहब है वो तो बुजुर्ग आदमी है. I'm very fine. The situation is very tense here. कोई बात नहीं. Shall we start? People are joining. Let them join. ये कौन है? ऋषिराज. कृति कुलकर्णी. ओके. और कौन है? क्या क्या पढ़ो? चाहे अरे रे 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 तो स्क्रॉल होते ही जा रहा है. स्क्रॉल होते जा रहा है. क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अरे यार इसका बहुत अच्छा है. अरे देखो 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 देखो. चाहे आए करोना या फराना, आपकी मुस्कान मत कहना, हम तो सर के नमूने, कॉन्सेप्ट पता चले, गोली मार मार्क्स आए झोली में. आहा हा हा हा. वाह 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 वाह. चलिए. So today we'll discuss the working principle of Pelton Wheel. And in the last class we have seen Pelton Wheel is a high head tangential flow, then low specific speed, low discharge impulse turbine. I think I took care of high head impulse. We have discussed high head impulse. अब देखेंगे tangential flow. Please the most unfortunate thing is people are joining slowly. अभी तो 103 है. अभी फटाफट. I'll wait for 1 more minute. I'll not give more than that. So उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. आपको कोई काम है? नहीं ना? You have to wait. Okay? चलो. चलो. As today what the sequence or today the course of action is, I'll discuss the working principle of Pelton wheel and I'll discuss various efficiencies in a very detailed manner. क्योंकि some students expressed doubts on hydraulic efficiency, runner or blade efficiency, then mechanical efficiency, overall efficiency. So let me try to remove that confusion because things are very clear. In fact, there is no confusion, but I don't know unnecessarily why do you people get confused with that. चलो start करें. In the name of God. बोलो रे बबलो, एक बार थम्स अप मारो या यो यो बोलो. अरे 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 यार मेरे. एक बार रिफ्रेश. चलो. रिंकिया के पापा ही हंस दे, ही हंस दे, ही हंस दे, ही हंस दे, हंस दे. चलो लेट्स स्टार्ट. विवेकानंद सबल. तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. आई वांट टू जॉइन योर लेक्चर. एक्सेल पे या इग्नाइट पे? मैं तो एक्सेल पे बहुत टाइम स्पेंड कर रहा हूँ. कृष्णा रेड्डी. कृष्णा, व्हाट इज कृष्णा? नॉट कृष्णा है ना. चलो आई एम स्टार्टिंग द क्लास. सो आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली. हाँ, मंजिल मगर कौन है ये? पता नहीं. बोलेंगे इनको प्लीज टेक्स्ट में. चलो चलो चलो. नाउ आई एम स्टार्टिंग द क्लास एंड आई टोल्ड यू. अब प्लीज, अब मेरा एक रिक्वेस्ट है. प्लीज अब नो कमेंट्स. नो कमेंट्स. अब किरण भाई विल टेक इन चार्ज ऑफ दोज हु कमेंट. उनको वो जेल में डालेंगे. किरण भाई यू आर इन चार्ज ऑफ दैट. चलो.
I told you very clearly that Pelton wheel is a tangential flow turbine. What do we mean by that? Let us take the runner. The rotating part, we call it as runner or rotor. Please observe, my dear students, and you know this is tangent to the wheel. इस wheel को ये क्या है? Tangent. The flow is tangential flow. Pelton wheel is a tangential flow. Already in my earlier class, I told you impulse and high head. I gave explanation for that. Now I am saying it is a tangential flow. कैसा होगा एक बार देखेंगे. Look at my dear students. If you see, have a look at this. Please observe. This is the runner. This is the runner. This is the runner, and the jet is coming, and you know this is the nozzle. This is the nozzle. So nozzle say the fluid is coming at very high velocity, and it is hitting this in what direction? एक बार देखना. How is it hitting? Tangential to the runner. Tangential to the runner. So how is this hitting? Tangential to the runner, and that's why this turbine is known as tangential flow impulse high head. Already I explained to you what is impulse, what is high head. Ab dekhenge what is tangential flow. So the fluid is hitting. No comments please. The fluid is hitting and it is tangential to the runner. Ab dekho. If you see blades, this we call it as buckets or blades. इसको हम बोलते हैं, this we call it as buckets or blades. घर में कभी स्पून देखे आप? कभी किचन पे गए तो कि देखने का? कभी स्पून देखे? आई थिंक कोरोना के कारण लॉकडाउन में तो स्पून देखे होंगे, है ना? सो अब देखते हैं हाउ द ब्लेड्स लुक लाइक. प्लीज लिसन. पुरुषोत्तम मर जाओ अगर नहीं. स्पून का मतलब चम्मच रे, चम्मच. अगर नहीं देखे तो जाके मर जाओ. ओके है ना पुरुषोत्तम कुमार? चलो. The blades are something like this. I'm showing you the other view. देखो. ओके कोई दिक्कत है. मैं भी जोक, आई एम ऑल्सो किडिंग. जाके मर जाओ बोल के, है ना? वेरी गुड. सो सुनो. The blades are like something like this. अगर आप परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन देखेंगे डेप्थ रहेगा स्पून. अब एक्चुअली इसको देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा हाउ इट इज हिटिंग. एक बार देखना हाउ इट इज हिटिंग. हाउ इट इज हिटिंग आई विल शो यू. देखो एक बार प्लीज ऑब्जर्व हियर. देखना एक्चुअली ये these are double semi ellipsoidal cups. इसको बोलते हैं डबल सेमी एलिप्सॉइडल कप्स. इसको बोलते हैं डबल सेमी एलिप्सॉइडल कप्स. तो क्या होगा? प्लीज अभी नहीं. अविनाश बाल अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, पहले सुनो प्लीज. तो एक्चुअली द फ्लूइड इज एंटरिंग. इधर देखो. इसको बोलते हैं, दिस वी कॉल इट एज, मैं यहां पे शो कर रहा हूं, दिस वी कॉल इट एज स्प्लिटर. प्लीज दिस वी कॉल इट एज स्प्लिटर. इधर देखो ये है, ये इधर देखना, इधर देखो स्क्रीन पे देखना. दिस इज अ स्प्लिटर. दिस इज वन पोर्शन, दिस इज अनदर पोर्शन. इसको हम बोलते हैं डबल सेमी एलिप्सॉइडल कप्स. ऐसे पूरे सर्कमफरेंसेस पे हम इंस्टॉल करते हैं. जनरली दीज बकेट्स और वेन्स, इसको हम बोलते हैं बकेट्स और वेन्स. जनरली ऑन बेड दे आर ग्रेटर देन 15. ये जो 1 2 3 4 5 6 something like this, generally they are more than 15. And what is the shape? Let's see what is the shape. अब देखो तो ऐसे पूरे सर्कमफरेंसेस पे रहेंगे. अब देखो बेटे, सो प्लीज ऑब्जर्व. नोजल से जेट आ रहा है. हाउ इट इज कमिंग? इस व्हील को टेंजेंशियल, इधर देखना, इस व्हील को टेंजेंशियल है, इस व्हील को टेंजेंशियल आके इधर देखना. इट इज कमिंग. देखो एक बार, इट इज कमिंग, हिटिंग एंड रोटेटिंग. तो क्या हो रहा है एक्चुअली? क्या हो रहा है? आने के बाद, एक बार आने के बाद इधर स्प्लिट होके ऐसा जाएगा. इधर आके देखो इट इज, अरे ये एंगल में बिठाओ. हाँ, मेरा हाथ ऐसा आएगा.
आके इसको हिट करने के बाद ये देखो इधर ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। इसको हिट करने के बाद, एक सेकेंड, हाँ, इसको हिट करने के बाद ये ऐसा जाएगा, ऐसा ऐसा जाएगा। सो इट इज हिटिंग हियर टेंजेंशियली, टेंजेंशियली इट इज हिटिंग, टेंजेंशियली इधर हिट कर रहा है। कैसे टेंजेंशियल, एक बार देखना, ये पूरा इसके लिए ये क्या है, इफ यू सी दिस इज टेंजेंशियल, दिस इज, एक सेकंड, एक सेकंड, दिस इज टेंजेंशियल, दिस टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियली एंटर हो रहा है, इधर एंटर होके हिट करके, ये देखो, ये देखो कैसा घुमा रहा है, देखो ये नोजल है, ये दिस इज नोजल, नोजल से जेट आ रहा है, जेट आके इसको हिट करके, देखो हिट करके इसको स्प्लिट कर रहा है, हिट करके इसको स्प्लिट कर रहा है। अगर इस व्यू को देखेंगे हम, इफ यू सी दिस व्यू, दिस व्यू, एक बार देखो, तो आई विल शो यू, इसका व्यू देखेंगे तो एक्चुअली इधर देखना, स्क्रीन की तरफ देखना, इधर आके देखो, इधर आके ऐसा, इट इज कमिंग परपेंडिकुलर द स्क्रीन, आके ऐसा जा रहा है। सो मैं आपको ये व्यू दिखाऊंगा। अगर इसको 90 डिग्री टर्न करेंगे, इफ यू टर्न दिस 90 डिग्री, तो ये क्या हो रहा है, ऐसा आके इट्स फ्लोइंग लाइक दिस, इट इज स्प्लिटिंग लाइक दिस, इट इज स्प्लिटिंग लाइक दिस। तो ये कौन सा फोर्स है, इफ इट इज कमिंग लाइक दिस, इट इज टेंजेंशियल, टेंजेंशियल। तो जब देयर इज अ टेंजेंशियल फोर्स, इसको क्या करेगा, ये घुमाएगा। नाउ इट इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली, द nozzle, from the nozzle the jet is coming and hitting on this, हिट होके ये ऐसा आ रहा है, ऐसा। सो अरे यार, आप लोगों को समझ में आया बेटे, सबको समझ में आया, सुपर विजुअलाइजेशन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, यस और नो रे, प्लीज ऑब्जर्व एक बार, इधर आ रहा है, एंड दीज शेप्स आर नोन एज डबल, डबल का मतलब दो है, इधर देखो, दो दो दो, डबल सेमी एलिप्सॉइडल कप्स, डेप्थ है, डेप्थ है, एलिप्सॉइडल कप्स बोलते हैं इसको, ब्लेड या वेन या बकेट बोलेंगे। सो व्हाट इज द शेप ऑफ द बकेट, डबल सेमी एलिप्सॉइडल कप। तो इधर देखना, ऐसा हिट होके, इधर देखो रे नमूने, ऐसा हिट होके, देखो 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 देखो, अरे, एंड दिस टेंजेंशियल, सो दैट्स व्हाई इट इज अ टेंजेंशियल फोर्स। एक सेकंड, वन सेकंड प्लीज, ऋषभ, आई एम इन स्पेशल क्लास ऋषभ, या राइट। सो प्लीज ऑब्जर्व, यहां आके हिट करके स्प्लिट होके जा रहा है, स्प्लिट होके जा रहा है। सो दिस इज द एंट्री, दिस इज द एंट्री, दिस इज द एंट्री, एंड दिस इज द एग्जिट, दिस इज द एग्जिट। तो एग्जिट यहां पे भी दिखा सकते हैं, यहां पे भी दिखा सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू, दिस इज एंटरिंग एंड मूविंग लाइक दिस। तो एक बार देखना बेटे, व्हाई डू वी हैव डबल सेमी एलिप्सॉइडल कप्स, व्हाई डू वी हैव डबल सेमी एलिप्सॉइडल कप्स, आई विल टेल यू, प्लीज नोट डाउन दैट दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन। इधर देखना, मेरे तरफ देखना, दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन। तो अगर आके ऐसा जा रहा है, इफ इट इज गोइंग लाइक दिस, इफ इट इज गोइंग लाइक दिस, सो वन कंपोनेंट इज इन दिस डायरेक्शन, सो वन कंपोनेंट, एक्चुअल कंपोनेंट इज इन दिस डायरेक्शन, सो दोनों न्यूट्रलाइज होंगे। सो दैट्स व्हाई, अगर इफ देयर इज ओनली सिंगल, so देखो, if there is only single, it flows and there will be force in this direction. So if there are double, so what is happening, the fluid is entering, तो एंटर होके इधर आ रहा है, देखो, तो ये कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, सो बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर। सो एक्शियल थ्रस्ट, तो बेरिंग पे जो लोड गिरेगा वो लेस आएगा, एक्शियल थ्रस्ट। सो व्हाई डू वी यूज डबल सेमी एलिप्सॉइडल, सो व्हेन इट इज हिटिंग लाइक दिस, when it is hitting like this and moving like ऐसा जा रहा है, तो एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, one is coming like this, one is coming like this and one is coming like this। तो ये एग्जिट की बता रहा हूं। so when it is moving like this, इसका एक्शियल फ्लो इक्वल होके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। प्लीज टेल मी, हैव यू फॉलोड? तो why do we use double semi ellipsoidal cups, why do we use double semi ellipsoidal cups? तो इधर देखना बेटे, so please observe, फ्लूइड जब आके, इधर देखो रे नमूने, फ्लूइड जब आके हिट करेगा तो ये एक ऐसा आएगा, एक ऐसा आएगा, तो इसका ये कंपोनेंट, एक कंपोनेंट न्यूट्रलाइज होके, सो शाफ्ट के ऊपर जो एक्शियल थ्रस्ट, जो एक्शियल लोड आएगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी यूज डबल सेमी एलिप्सॉइडल कप्स। इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं आपको, अरे बाबा, आर वी क्लियर, आर वी क्लियर माय डियर? अरे कुछ बोल ही नहीं रहे, प्लीज टेल मी, आर वी क्लियर ऑल ऑफ यू? यस। So please observe, what is the shape? Double semi ellipsoidal copes, double semi ellipsoidal copes, copes नहीं, CUPS, अरे नमूने, double semi ellipsoidal cups, and please observe, you repeat, अरे नमूने, you repeat, देखो नमूने, देखो रे, एक्चुअली क्या है ना, फ्लूइड ऐसा आ रहा, कहां से आ रहा है,
तो नोजल से आ रहा है, तो थोड़े एंगल से दिखाएंगे, नोजल से ऐसा आ रहा, नोजल से आके हिट करके when it is hitting this is splitting, when it is, this is the axial direction, this is the axial direction, this is the tangential। एक बार बता रहा हूं सुनो, ये छोटा सा स्क्रीन देते हैं हमारे को, कोई वर्क करने ही नहीं आ रहा इस पे, तो देखो this is the tangential direction, this is the axial direction, so this is, I want force in this, इसको घुमाना है तो ये फोर्स चाहिए, ये फोर्स चाहिए। so please observe the nozzle, from the nozzle the fluid is entering, enter होके split हो रहा है, हाँ इंटर होके स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट होके देखो देखो इधर ऐसा हो रहा है, इधर देखो स्प्लिट होके ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, तो एक कंपोनेंट इज गोइंग लाइक दिस एंड दूसरा इज गोइंग लाइक दिस, तो ये दो ऐसे, इधर आओ, ये ऐसा जा रहा है, देखो प्लीज ऑब्जर्व, एक सेकंड, one is going like this, one is, so these two forces, these are along the axis, they, one is like this, one is like this, so एक ऐसा, तो क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, that's why axial force is zero, that's why we use double semi ellipsoidal cups। is it clear my dear students? अरे लोग समझ में आए? thank you बेटा, go, you can go now, okay, thank you। Okay, they are double semi ellipsoidal cups, that's why we have to be very very careful, very very careful। please tell me, are we clear? Yeah, Kriti, she's my daughter, younger daughter, she's the topper of all classes, so all 6 sections she's the topper। yeah, chalo, let's not deviate, so please, हाँ, तो ये होगा। अब ध्यान से सुनो बेटे, let's try to draw, please observe, understand carefully, understand carefully, please now देखो, तो अब हम देखो शेप शो कर रहे हैं, एक्चुअली क्या हो रहा है मैं बताया था, प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली, प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली, प्लीज एक बार मैं बताता हूं, एक बार तो और थोड़ा डिटेल वे में बताऊंगा आपको, सो दैट यू विल एंजॉय, बिकॉज विजुअलाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बार फ्रांसिस टर्बाइन पढ़ाऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। देखो एक्चुअली ये कैसा ऐसा रहता है, अरे यार अगर आप एक एंगल में देखेंगे, प्लीज ऑब्जर्व, प्लीज ऑब्जर्व, ऐसा आके ऐसा निकल रहा है, प्लीज ऑब्जर्व क्लियरली, होप यू अंडरस्टूड। जब वो आके ऐसा आके ऐसे निकल रहा है, तो आई विल शो यू लाइक दिस, इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम द टॉप, तो प्लीज ऑब्जर्व हियर, तो ऐसे आके ऐसे निकल रहा है, this is the entry and then it is leaving like this, it is leaving like this। excellent my dear students, अब देखते हैं, let me try to draw velocity triangles, let me try to draw velocity triangles, लेकिन velocity triangles draw करने के लिए, to draw velocity triangles first you need concepts। तो आप सोच रहे होंगे सर पेल्टन व्हील के पीछे ही क्यों पड़े, सो आई एम गोइंग टू गिव यू सो मेनी इनपुट्स before we draw velocity triangles। if drawing velocity triangles is clear, then you will not have any problem। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, please I'll go very slowly and neatly, I'll go very slowly and neatly। देखो, let us assume that this is fixed, look at this is fixed। now say fluid is coming with a velocity v or v1, whatever it may be, let us say the fluid is coming with a velocity v, okay, now the fluid is coming with a velocity v। अब मुझे बताओ with what velocity it hits this wall। मुझे पता है, ये तो सुनो रे, ये तो रेस्ट पे है और ये अपने वेलोसिटी से आके हिट करेगा, absolute, this velocity with which the fluid is flowing is known as absolute velocity। खुद का velocity absolute, relative means with respect to something। अगर ये velocity 0 है तो क्या होगा, ये अपने velocity से हिट करेगा। excellent। अब देखो बेटे, ये जा रहा है, सुनो, ये जा रहा है कुछ velocity u से। what is this velocity of this object, which we call it as runner or blade जो भी है, इसका absolute velocity v है। let us say its absolute velocity is v, and you know very well it will hit this। अरे दोनों बसेस जा रहे, देखो
एक बस ऐसा जा रहा, एक बस ऐसा जा रहा, जब ओवरटेक करके जा रहा तो आपको क्या लेगा, धीमे से जगह जैसा. So therefore it will hit with v minus u, and that is known as relative velocity. That is, when relative will come into picture only when both are moving. Absolute will come in picture only when one is moving. I repeat, relative will come into picture when both are moving. Absolute will come into picture with when single, individual absolute, relative with respect to something. Excellent. When I use the word velocity triangles, when I use the word velocity triangles, triangle has three sides. So it is a triangle drawn by taking velocity. So there must be three velocities. I repeat, कभी भी याद रखना, velocity triangle जब draw करेंगे, कभी भी वो तीन velocity के बीच में होता है. Velocity triangles are drawn by taking three velocities. What are those? Let us see. Absolute velocity of fluid. No comments, please. Absolute velocity of fluid, and I will designate it with V, capital V. V. Absolute velocity of the fluid. Absolute velocity of the fluid, V. Then blade, bucket, or vein speed. I'll designate with this with you, and that can be written as pi d n by 60 or r omega or omega. No problem at all. It's something like this. इधर देखना, please observe. ये रनर है, ये ब्लेड है. So अगर ये घूम रहा है, this velocity, इसका velocity u, इसका velocity u. So that is written as, for example, अगर इसका diameter d है और ये speed n से rotate हो रहा है, तो that u is nothing but पाई डी. आप जानते हैं. सो अगर यहां का वेलोसिटी u चाहिए, u is equal to r omega. Omega is its angular velocity and omega can be written as 2 pi n by 60. डबल वॉइस आ रहा है. Is double voice coming? Is everything clear? आप बोलो बेटा, कुछ तो बोलो. Is double voice coming? According to me, no. चलो चलो, अरे यार सुनो सुनो. तो नाउ टेल मी, कभी भी याद रखना, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सुनिए बेटे, कभी भी याद रखना. और मैं एक्चुअली जनरली क्या करता हूं ना, व्हेन आई टीच वेलोसिटी ट्रायंगल्स, I'll be taking 5 hours to teach only velocity triangles. In my regular offline classes, I take 5 hours to teach only velocity triangles, because any profile is given, any blade profile, forward angle, backward angle, radial, forward blade, backward blade, radial blade, any blade is given, you should be in a position to draw velocity triangles. The problem is drawing velocity triangles. एक बार velocity triangles आ गए, then the problem is over. जिसको velocity triangles draw करना आता है, खत्म, बस वो तो जीत गया. जब मैं पावर प्लांट आपको पढ़ाऊंगा, कंप्रेसर्स, स्टीम टर्बाइन्स, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर्स, रोटरी मतलब सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स, and you know Pelton Wheel, Francis Turbine Kaplan, that's why I take a lot of time for this. अब याद रखना, कितने कंपोनेंट्स आप ड्रॉ करेंगे? 3 components. What are those? Absolute velocity, blade speed and relative velocity. याद रख लेना, ये जो relative velocity किन दोनों, when you say relative, you should know किन दोनों के बीच में. So it is absolute fluid or blade, absolute fluid or blade, absolute fluid or blade. खुद फ्लूइड का वेलोसिटी, फ्लूइड आ रहा है और यहां ब्लेड घूम रहा है, तो फ्लूइड का वेलोसिटी v है. Fluid, yeah, अरे Yedukondalu has come. Welcome, you Yedukondalu. Let me introduce Yedukondalu to you. He is our chem student and he got, I think, 6 or 7 jobs. I think he is now in IOCL and he is appearing for mains, engineering services mains लिख रहा है. Already एक बार इंटरव्यू जाके आ चुके हैं.
Brilliant guy, brilliant guy. Very hardworking, very hardworking. Chalo, let's get back. Thank you, Edukondalu. God bless you. God bless you. Okay, this is the blade speed. This is the blade speed. This is the blade speed. Up draw करेंगे. Please understand carefully. Now, I have shown you very clearly the other view. I have shown you very clearly. याद रखना बेटे, वेलोसिटी ट्रायंगल्स ड्रॉ करने के लिए सिंपल रूल बताऊंगा. सिंपल रूल बताऊंगा. दी हम वेक्टर की बात कर रहे हैं बिकॉज इन वेक्टर्स आई एम टॉकिंग द absolute velocity of the fluid is the resultant of blade and relative velocity. मैं फिर से बता रहा हूं, सुनो, और इसका एप्लीकेशन अभी बताऊंगा. आई विल शो यू नाउ, देन यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली. सो बिफोर आई गो फॉर दिस, फिर से बता रहा हूं, सुनो. I write, and if this logic is clear, you will be in a position to draw velocity triangles easily. Now I'm writing absolute velocity is the resultant of blade speed u and relative velocity vr. अब ध्यान से सुनो बेटे, अब ध्यान से सुनो. Please listen carefully. Please listen carefully. Now I'll give you a simple example. Let us assume that, please listen. Let us assume that this is the absolute velocity. Now I am going to teach you where students are committing mistakes. जहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करेंगे वो बताने जा रहा हूं मैं. Look at, let this be the absolute velocity. Let v be the absolute velocity of the fluid. मतलब खुद का velocity, its own velocity with which the fluid is flowing. It has nothing to do with anything. Its own velocity it is flowing, v. What is the blade velocity? U. And please see the direction of blade. See the direction of blade. Is it in the rightward direction or leftward direction? Right. Yes. Stop. I'll draw two triangles. Now you tell me which one is correct, which one is wrong. Okay. Please observe here. This is V. This is U. This is, let us say, VR. Okay. This is one. The second triangle that I am drawing is अरे चलो दोनों को सेपरेट करके दिखाएंगे. टुडे विल लर्न ग्रेटर थिंग्स. देखो, प्लीज नो कमेंट्स. This is V, U, VR. The second case, V, U is rightwards, VR. Now tell me, say this is first and this is second. Which triangle is correct? Which triangle is correct? First or second? वही तो बनता है. There lies the logic. First. Oh my God. Second और first के बीच में बहुत कंपटीशन है. Oh my God. Second. इसका मतलब है आपको बहुत सीखना है. So I told you very clearly. मैं आपको क्या बताया था?
देखो, absolute velocity is the resultant of relative velocity and blade speed u. This I told you. Very good. Abhinash Rai. Okay, देखो. See the absolute V. This V should be the resultant of relative and u. कभी भी याद रखना, जब वेक्टर फॉर्म में आप ऐड करेंगे, the resultant of VR and U, the resultant of these two, must be our absolute velocity. The result, ये VR और U का resultant क्या होना है? Absolute velocity. That is the simple logic. एक ही logic है to draw velocity triangles. What is the logic? The absolute velocity must be this V, must be the resultant of VR and U. This should be the resultant of VR and U. अब देखते हैं, इधर आइए, प्लीज ऑब्जर्व हियर, कॉमन सेंस यूज करना. दिस V should be the resultant of what? ये दोनों का, इधर देखना, एक U है, एक VR है. The resultant of these two should be V. I repeat, the resultant of these two, which two? VR and U should be V. Let me check whether I am getting in this triangle or not. Let us check whether I am getting or not. Please observe. This is our U. This is our VR. Okay, look at, this is U. This is VR. Now, my dear students, is there any, in this case, is there any vertical component of U? Zero. No, there is only horizontal component of U. Are there any? Common sense. Water strike the blade. Move. That why another explanation. Yeah. Look at. Please observe here. Please, please. Ab dekhna bete. If I resolve this VR into two components, VR, the horizontal component will be left, vertical component will be up. So therefore, agar aap isko resolve karenge, if you resolve VR into two, I want ye donon ka resultant, the resultant of U and VR, the resultant of these two should be V. Whether I am getting or not, let us check. Idhar dekho. What is the horizontal component of VR? Leftward. Dekho, this is rightward, and the horizontal component of this is, dekho, the horizontal component of VR, no comments. Please, no comments. The horizontal component of इसका चेंज, जब आपके पास 100 रुपीस है, 100 रुपीस का चेंज लिए, तो you will have change, but you don't have 100 रुपीस. अरे 100 रुपए दे दिया, तो 100 रुपए देने के बाद मैं, फॉर एग्जाम्पल, वो 60 रुपए का एक नोट, 40 रुपए का एक नोट दिया. आप बोलेंगे सर 60 रुपए कहां है? आया मेरे जमाने में 60 रुपए का एक नोट आया, 40 का एक नोट आया. So look at, I have taken change for this. So the horizontal component will be this, the vertical component will be this. तो जब चेंज लिए तो ये नहीं रहेगा. अब ध्यान से सुनो बेटे. तो one is right, one is left, exactly same. These two get cancelled. जब these two get cancelled, you have only this. Yes, ये दोनों का resultant, I am getting only this. That's why it is correct. If you see here, please observe here. If you see here, my dear students, look at my dear students. Iska right, okay. And if you see, ye donon ka resultant, always the resultant of these two should be W. And if you resolve this, you have VR horizontal,
we are vertical. Iske components horizontal, vertical. Horizontal is right, u is also right. So they don't cancel. They don't cancel. You have this horizontal u and this horizontal component. So there will be much more horizontal component and there is also vertical component. There is also मतलब ये दोनों का ये होगा और ये भी रहेगा. So the resultant of these two, I am not getting only vertical, because to get vertical, the horizontal right, horizontal left should cancel, but the horizontal, there is no horizontal left here, but this is also horizontal right, this is right. So dono, there is net value of horizontal in the rightward direction, but the resultant should not have horizontal. So this triangle is wrong. I know you are not following. Please tell me, have you followed? All of you, have you followed? All of you, have you followed, bete? You are not saying anything. Please tell me, have you followed? तो क्या लॉजिक है? क्या लॉजिक है? क्या लॉजिक है? Please tell me, what is the logic? What is the logic? What is the logic? What is the logic? The absolute velocity v, u and vr का रिजल्टेंट होना चाहिए. u and vr का रिजल्टेंट होना चाहिए. अरे यार, आर वी क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो इफ इट इज क्लियर देन आई विल प्रोसीड. जब आप क्लास में आएंगे मेरे ऑफलाइन में मॉडल्स के साथ बताऊंगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, वर्टिकल, क्योंकि ये छोटे स्क्रीन पे मुझे नहीं आ रहा है. दैट इज माय डिफिकल्टी. होप यू हैव अंडरस्टूड. इज इट क्लियर? क्लियर बेटे? अब देखो, नाउ लेट अस टेक पेल्टन व्हील. कैन एनीवन टेल व्हाट इज दिस? What is this? Splitter, splitter, splitter. अब देखो, please observe. Let us assume that the blade is moving at u. The blade is moving at u, at a speed u. Please observe. ये nozzle है. This is the nozzle. Let us say from the nozzle the fluid is coming. Let us say from the nozzle the fluid is coming. Suno. Let this be V1. Can anyone tell what is V1? Can anyone tell what is V1? It is the absolute velocity of the fluid coming from the nozzle hitting the vein. It is about to hit the vein. Absolute velocity. When I write 1, it is inlet. When I write 2, it is outlet. 1 is inlet, 2 is outlet. Excellent. The fluid is moving with a velocity v. Okay. ध्यान से सुनो बेटे. What is the blade velocity? U. U, इधर देखना. Let us assume that this is the blade velocity. And you know very well, blade is in this direction, jet is also in this direction, and I say this as, अभी तो देखो, प्लीज देखो, अब वेक्टर से देखना, प्लीज ऑब्जर्व हियर, वेक्टर से देखना. So both are in the same direction. Jet and blade, they are in the same direction. तो किस velocity से hit करेगा? Hitting is always with relative. Hitting is always with relative. तो किस velocity से hit करेगा? इसका v1 है, इसका u है. It is v1, it is u. So it hits with v1, it hits with vr1, it hits with vr1. And एक बार क्रॉस चेक कर लेना, प्लीज क्रॉस चेक. Is my v1 इसका और इसका? So what is the resultant of u and vr? The resultant of u and vr, the resultant of u and vr is absolute velocity. इसका और इसका resultant, इसका और इसका resultant v1 आ गया, देखो. So please note down that the inlet velocity triangle of Pelton wheel is a straight line. So you will get a triangle as a straight line only in Pelton wheel. He may be asking a question like this: in which device or in which turbine the inlet velocity triangle is a straight line? It is Pelton wheel.
यहां तक समझ में आया? प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? बोलो रे, प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? एक्सलेंट. अब देखना, सो प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली. एंड व्हाट इज दिस डायरेक्शन? अभी तो बताया. प्लीज ऑब्जर्व. जस्ट नो आई टोल्ड यू, जस्ट नो आई टोल्ड यू. व्हाट इज दिस डायरेक्शन? एक बार देखना इधर, एक बार देखना. What is this direction? It is nothing but tangential. So please observe here clearly. What is this direction? एक second. Don't worry, don't worry. हाँ, ये कौन सा डायरेक्शन है? ये टेंजेंशियल. ये कौन सा डायरेक्शन है? इधर देखना, इधर से देखना, एक बार इधर देखना. Please look at. What is this direction? What is this direction? Tangential. Tangential. So this is tangential. मतलब मेरा velocity. Always remember, absolute velocity के दो बच्चे होते हैं. I repeat, absolute velocity has two children. One is flow velocity, one is whirl or tangential velocity. एक बार दो भी बच्चे हो सकते हैं, एक बार एक ही बच्चा हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम दो बच्चे होते हैं. मैक्सिमम दो, दैट इज द लिमिट. So now tell me, I told you very clearly, my dear students. Please observe here. इधर देखना, मेरे तरफ देखना. Please observe, my dear students. Look at. Please एक बार. हाँ. See, what is this direction? ये क्या है रे बाबा? इस व्हील को ये क्या है? Tangential. Please observe. इस व्हील, एक सेकंड please. कृति बोलो, चलो. Wait. Close कर. असदर बेटा. जवळ आहे. मला स्क्रीन कंप्लीट दिसत होता. अब देखना. असदर. ही अँगल वर. हा, असदर बेटा. त्यांना दिसावं सगळं. इथं तर बरे तुझे बोटच दिसलेले. इथं की? हां. राईट. हरमा. ओके, अब देखो प्लीज. लुक एट. सी, इट इज हिटिंग लाइक दिस. सो ये कौन सा डायरेक्ट हिट करके, अब मैं बताता हूं. तू चांगला धरना गेली बेटा, मी दाखवतो. एक सेकंड. कसं राव म्हणजे हे असं राव, असं दिसो मला, असं हे ए ऍक्सिस वर राव, हे असं धर. एग्जैक्टली. एक्चुअली ऐसा है, इधर देखना. एक्चुअली इधर देखो, प्लीज ऑब्जर्व. तो मैं ऐसा दिखा रहा हूं. सी, एक्चुअली इफ यू सी फ्रॉम दिस साइड, इफ यू सी लाइक दिस, यू विल सी परफेक्टली. बट सेम थिंग आई एम शोइंग लाइक दिस, तो आपको एक ही दिखेगा. देखो एक बार. इट इज हिटिंग लाइक दिस. देखो, हिटिंग लाइक दिस. इट इज कमिंग फ्रॉम द जेट से ऐसा आ रहा है. इधर देखो, जेट से ऐसा आ रहा है, जेट से ऐसा आके ऐसा घुमा रहा है. तो यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस कंपोनेंट? ये कौन सा कंपोनेंट है? 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 टेंजेंशियल. सो दैट्स व्हाई दिस इज टेंजेंशियल. देखो, दिस इज टेंजेंशियल. तो आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली. देखो एक बार, ये ऐसा है. इफ दिस इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल, इसको हम बोलते हैं फ्लो. So absolute velocity has absolute velocity. Don't get confused between velocity triangles and absolute velocity के बच्चे. I repeat, velocity triangle is different. Absolute velocity components are different. I repeat, velocity triangle तीन components से होते हैं. I mean 3 velocities: absolute velocity, blade velocity, relative velocity. वो छोड़ दो. I am focusing. Look at. I am focusing only on V. What is V? Absolute velocity. Absolute velocity. So absolute velocity has 2 children. What are those? Whirl, that is tangential, and flow. देखो, इधर देखो बेटे. अगर absolute velocity ऐसा है, तो इसका tangential component और whirl component ये है, और ये flow component है. और एक बात, अगर absolute velocity ऐसा है, so this will be our flow component and this will be our whirl component. And please tell me, if this is my absolute velocity, अगर absolute velocity ऐसा है, तो there is only, ये पूरा कौन सा डायरेक्शन में है? whirl component. So this will become, my dear students, इसको हम क्या लिखेंगे?
it is also equal to anyone. Excellent, awesome students of India. It is also equal to your whirl. Therefore, at the inlet, the whirl component is, at the inlet, the whirl component and absolute velocities are same. Please tell me, are we clear? Are we clear, my dear students? Bolo re. Bolo, sirs. Hope it is clear. Excellent. Absolutely, it's zero. Very good. अब आइए यहां तक. यस सर, थैंक यू. यस तौफिक, यू आर राइट. अब देखो, अब क्या हो रहा है, जेट आके स्प्लिट होके जा रहा है. इट इज कमिंग, स्प्लिटिंग एंड गोइंग, स्प्लिटिंग एंड गोइंग. अब देखो, इधर देखो. Sushmit? Yeah, I'm in special class, Sushmit. Yeah. Yeah. देखो, प्लीज. नाउ दिस इज फ्लूइड आके इधर से जा रहा है, फ्लूइड आके इधर से जा रहा है. It's going like this, it's going like this, it's going like this, it's going like this. So this is the exit. मैं बताया था. Entry, when both are moving, it is always relative that comes into picture. देखो, blade is moving, fluid is flowing, blade is moving. When both are moving, therefore it is entering with what? Relative velocity. Blade is moving with u, fluid is flowing with v, so therefore entry is with what? Relative velocity. Whenever, always remember, when both are moving, the entry and exit is always relative. When both are moving, the entry and exit is always relative. When both are moving, the entry and exit is always relative. तो देखो, प्लीज ऑब्जर्व. मैं अभी फिर से बता रहा हूं आपको, या फिर से बता रहा. सुनो. ओके, सुनो. The fluid is entering. देखो, the blade is moving with you. Excellent. The blade is moving with you. Okay, it is moving with you. Now, the absolute velocity is v. But please note down that it is not entering with v. क्योंकि वो v से आ रहा है. So fluid is coming with v absolute velocity. लेकिन when it is coming, it is also moving. So it will hit with what? It will hit with relative velocity. So the entry is relative. Entry, it is moving, already adjust होके बाहर आ रहा है. So सुनो, fluid is following the blade. It follows the blade. अब exit हो रहा है. देखो exit हो रहा है. मुझे बताओ किससे exit होगा? क्योंकि fluid is flowing. Please listen. Fluid is flowing, blade is moving. When both are moving, the entry and exit is relative. तो ब्लेड कॉन्टर्स को फ्लो होते हुए रिलेटिव वेलोसिटी से वो बाहर आएगा. सो एज इट इज कमिंग आउट, with what velocity it comes out? It comes out with relative velocity. It comes out with what? Relative velocity. देखो, entrance, look at entrance. अरे नमूना है मेरे तरह ये भी. Entrance is relative, exit is relative. But now I have to draw exit triangle. Only तो देखो किस वेलोसिटी से बाहर आ गया, किस वेलोसिटी. देखो बेटे, प्लीज ऑब्जर्व हियर. फ्लूइड इज कमिंग. देखो फ्लूइड इज कमिंग, मूविंग ऐसा होके गया. सो ऑब्जर्व हियर. तो प्लीज अंडरस्टैंड कितना डिफ्लेक्ट हुआ वो बोलो, इधर से इधर तक. मतलब दिस इज ऑल डिफ्लेक्शन एंगल. फ्लूइड देखो, आई विल शो यू द path followed by the fluid. देखो, fluid is coming, deflecting,
deflected like this means itna deflect hua. This is known as deflection angle. क्योंकि इधर देखो, प्लीज ऑब्जर्व हियर, इधर देखो, आके 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 देखो, ऐसा ऐसा, अगर ऐसा जा रहा है, so if the fluid is coming and moving like this, deflection will be 90. It is moving like this means it is deflecting more than 90. More than 90 means it is obtuse. So the deflection angle is obtuse. देखो ऐसा आके 90 नहीं, ऐसा जा रहा है, so it's coming like this, not like this, like this. So therefore the deflection angle is what? More than 90. Now we'll try to draw velocity triangle. So let this angle be some beta 2. We'll see what exactly is beta 2. We'll see what exactly is beta 2. तो मैं ऐसा करूंगा, देखो बेटे, what is this? Deflection angle. Let this be beta 2. Can anyone tell what is beta 2 from this? I know what is the definition, what is the meaning of beta 2. वो नहीं बोल रहा हूं मैं. What is beta 2? It is 180 minus, total is 180, 180 minus deflection angle. 180 minus deflection angle is my beta 2. तो यही है beta 2. देखो, please observe, इसका horizontal देखो, see this, it is moving, so this is beta 2. If that is beta 2, if this is beta 2, obviously, अरे यार मैं बोल रहा हूं, if this is theta, what will be this angle theta? अगर ये beta 2 है, this is also beta 2. Excellent, my dear students. Now I'm trying to draw. Now I'm trying to draw exit velocity triangle. This is the exit. तो आप exit velocity triangles annotation, it is supplementary of blade angle. The annotation is supplementary of blade angle. So we'll see what is a blade angle. देखो, so I can draw fluid is exiting like this or it is exiting like this. मतलब exit triangle यहाँ पे भी draw कर सकते हैं, यहाँ पे भी draw सकते हैं. Due to symmetry, both these are absolutely same. देखो, now this is my, look at, ये क्या है बोलो, ये क्या है? VR2. And tell me, velocity triangle comprises of how many? 3. तो relative होगा. Now tell me what is the direction of blade? Blade, you, right. Let us say it is you. अभी तो बताया. Just now I told you the resultant of these two should be, absolute velocity. Common sense. मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चुपचाप बैठ जाओ. ये दोनों का रिजल्टेंट चाहिए. तो आप मैकेनिक्स में पढ़ चुके. देखो, ये है. जस्ट इसको क्लोज कर देना. And we have studied from mechanics, the resultant must be closing side in opposite direction. देखो, इसको फॉलो करना, ओके, इसको फॉलो करना, ओके, इसको फॉलो करना. इट इज नॉट लाइक दिस. देखो, ऐसा, सी द डायरेक्शन, ऐसा, बट रिजल्टेंट शुड बी इन व्हाट डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन. इट इज अ सिंपल मैकेनिक्स. तो देयरफॉर दिस इज माय रिजल्टेंट. तो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या? Let me complete. I'll come, Gaurav. Okay, this is my absolute velocity to. एक कॉमन सेंस देखना. अगर ये दोनों का, अगर आपको कोई डाउट है, प्लीज लिसन केयरफुली. इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज ऑब्जर्व. मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा. पैरेललोग्राम ड्रॉ करना. लुक एट, इसको किसका रिजल्टेंट चाहिए? लिसन. This is VR2. This is you. एक सेकेंड. डोंट वरी बिकॉज मैं थोड़ा जीरो लेवल पे जाके पढ़ाऊंगा आपको. लेट अस से दिस इज VR2. दिस इज यू. ओके, कुछ मत करना. प्लीज ऑब्जर्व. आप ये दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, तो यू नो फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, कुछ मत करना. यू ड्रॉ अ पैरेललोग्राम.
If this is the parallelogram, the diagonal will represent what? The diagonal will represent what? The resultant. तो ये हो गया आपका resultant. If you show this is my कुछ confuse मत होना. देखो, this is VR2. Don't get confused. This is VR2. This is VR2. This is U. Why are you showing U in rightward direction? Because the blade speed is in the rightward direction. So blade is, अगर blade ऐसा move हो रहा है, तो I'll show in this direction. Excellent. तो कुछ मत करना. What is V? Can anyone tell? अभी तो बताया. What is V? What is V? What is V? It is the resultant of U and VR. Wait, Gaurav. Everyone should understand. People are not smart and intelligent like you and me. है ना? ओके, तो ये दोनों का रिजल्टेंट कुछ मत करना. ये दोनों आ गए, तो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या करना है? कुछ मत करो. ये दोनों का क्लोज कर देना. जस्ट क्लोज. बट दैट क्लोजिंग शुड बी इन व्हाट? देखो, ऐसा ऐसा. क्लोजिंग शुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. यस, दिस इज माय एब्सोल्यूट वेलोसिटी. दिस इज माय एब्सोल्यूट वेलोसिटी. एंड यू सी माय डियर स्टूडेंट्स, देखो देखो, प्लीज ऑब्जर्व. ये ब्लेड है, तो ये it will follow blade contour. It will follow blade contour. And please, ये तो tangential direction है, blade का tangential direction. That's why it is known as blade angle. So इस blade के लिए देखो, ये blade के लिए ये क्या होगा? This is my tangential direction. We call it as blade angle. कभी भी याद रखना. Please, some students may be saying, sir, ये relative है, तो ये भी टेंजेंट है ना, ये भी टेंजेंट है. कभी भी याद रखना, whenever I say blade angle, इंटीरियर ब्लेड एंगल, एक्सटीरियर ब्लेड एंगल, ट्रायंगल बंद होने के बाद कभी याद रखना, ट्रायंगल क्लोज हुआ, इधर देखो, ट्रायंगल क्लोज हुआ, यस, ट्रायंगल इज क्लोज, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी. कभी भी ब्लेड एंगल, कभी भी ब्लेड एंगल रिलेटिव टेंजेंशियल के डायरेक्शन में मेंशन करते हैं. Always remember, blade angles are mentioned relative tangential. देखो, relative velocity से बाहर आ रहा है, and this is the tangential direction. This is the tangential relative. लेकिन एक एंगल है, दूसरा भी tangential है. This is relative, this is tangential. कभी याद रखना, ट्रायंगल क्लोज कहां हुआ? या इधर नहीं हुआ, इधर नहीं हुआ, ट्रायंगल क्लोज इधर हुआ. That's why this is known as interior blade angle or blade angle. कुछ मत करना. Tangent, well, VR2 ड्रॉ करना. दिस इज VR2, दिस इज U, VR2U, एंड देखो VR2U. तो देखो प्लीज, इट विल कम आउट एट रिलेटिव वेलोसिटी एंड दिस इज टेंजेंशियल. ये ट्रायंगल क्लोज हुआ, रिलेटिव टेंजेंशियल, दिस इज रिलेटिव टेंजेंशियल, एंड द क्लोजिंग मतलब जो ट्रायंगल क्लोज हुआ, दैट इज वी कॉल इट एज ब्लेड. ये तो बाहर का है, ये तो एग्जिट है. दैट्स व्हाई Beta 2 is known as exit blade angle. फिर से बता रहा हूं, सुनो, फिर से again I am telling you, always remember carefully, how do I mention blade angles? Relative velocity से tangential direction, relative velocity से. अब देखो, ये blade है, तो it is coming, it will come out with what? Relative velocity. It will come out with relative velocity. अब tangent draw करना. ओके, देखो, टेंजेंट ड्रॉ करना. ओके, फर्स्ट ट्रायंगल कंप्लीट करो. फर्स्ट यू कंप्लीट द ट्रायंगल. ओके, ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? ये दोनों का रिजल्ट देखो, ऐसा ऐसा ऐसा. इट शुड नॉट बी लाइक दिस. क्लोजिंग शुड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन. यस, ट्रायंगल क्लोज हुआ. यस, अब कुछ मत करना. रिलेटिव टेंजेंशियल, ये तो टेंजेंशियल है, रिलेटिव टेंजेंशियल. ये ट्रायंगल क्लोज हुआ, रिलेटिव टेंजेंशियल. जब ट्रायंगल क्लोज हुआ, रिलेटिव टेंजेंशियल क्लोज्ड ट्रायंगल, दैट वी मेंशन इट एज व्हाट? ब्लेड एंगल. तो ऑलरेडी आप देख चुके हैं, प्लीज ऑब्जर्व हियर, ऑलरेडी आप देख चुके हैं जेट एंगल. तो जेट ऐसा आके इधर जा रहा है, सो देयरफॉर 180 माइनस, ओ माय गॉड, 1 आवर हो गया तभी. So tomorrow again I'll continue with different energy is always increasing, sir. Thank you Ed Kundalu.
Please, all of you, thank you. All of you, have you followed? And I request everyone to attend again tomorrow because कल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा. नहीं समझ में आया या नहीं आया? Please complete hydraulics. Telegram link. Okay. All of you, have you followed? अभी कंप्लीट नहीं हुआ. अभी कंप्लीट नहीं हुआ because generally special classes means only 1 hour. So I have that restriction. तो tomorrow 2 बजे, कल 2 बजे ले लेंगे, ठीक है ना? अगर आप परमिट करेंगे तो 2 बजे भी लेंगे, 4 बजे भी लेंगे. बहुत बढ़िया. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And you can follow me on Unacademy. PK006. This is my code. If you want, you can follow. I'm not forcing anyone to follow. No, आपको ठीक लगता है तो ही follow करना. If it is useless, leave it. So if you want, you can follow me. This is my code. And अच्छा, correct है. And this is my mobile number. You can take. You can send a message. Thank you. Thank you. तो कल और अच्छे चीजें देखेंगे. Is it clear? Sir, take fluid machines immediately after fluid. Bye, sir. Thank you. Thank you. Thank you. And please, I have models in my at my institute, at our institute. Sorry. So I have models. अगर आप if you can come, I can show you models. Okay. Thank you. तो आज close करेंगे. Okay. Thank you. God bless you. Love you all. So आज 8 बजे we have RAC class. We have RAC class today. 8 o'clock RAC class. Thank you. Regular class. Thank you.